as a founder, you start your journey because you are an individual, because this is your creative expression, right? आपके बहुत सारे idealistic भी होते हैं. I think the harshest reality that is world is not ideal. Your world is also not. For example, if you're virtuous and you're like, nee, I'm going to do right with all the people I work in the capacity of employees, vendors, partners, customers. पर सच ये है यार कि आपको ऐसे employees मिलेंगे जो आपके साथ गलत करके चले जाएंगे, आपको ऐसे customers मिलेंगे जो आपके साथ unfair होंगे, vendors होंगे जो आपका promise तोड़ देंगे, ऐसे vendors होंगे जिनके promise तोड़ने की वजह से आपका एम्प्लॉई या कस्टमर का प्रॉमिस टूट गया है. And this is also the time where the ideal view of that, oh, I'm going to choose my battle, goes out of the window, and you start taking up random battles, which were not supposed to be the battles, which were not the anticipated. If you fight these battles enough, you eventually realize कि यार, it's not about win and lose. It's really about choosing the battle, and it's really about figuring out that why did we start this, how did we reach here. And ये जो event है, ये जो person है, ये जो problem है, ये सिर्फ एक एबरेशन है इन दी कॉन्टिन्यूम. ये इवेंट है, ये स्पाइक है, वापस चली जाएगी, एंड फिर कल से सेम चलना पड़ेगा. ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इमोशंस, कि आपके ये वाले वो इमोशन है जो आपके वर्क रिलेटेड है. ये वाले इमोशन में जब आप ह्यूमन एक्ट करते हो, जब आपके प्राइमल इंस्टिंक्ट्स बाहर आ जाते हैं कि तेरे को आज छोड़ूंगा नहीं, and I'm going to take the revenge, or I'm going to give it back. ये सबसे आसान होता है करने. इनका डैमेज आपके हाथ में नहीं होता, पर ये इन पे एक्ट करना आसान इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास का इकोसिस्टम इसको जस्टिफाई कर देता है कि हाँ बुरा हुआ है मेरे साथ. बट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज मैनेजिंग योर ओन इमोशंस. लाइफ में कुछ बहुत तेज फट रहा है और there is a celebration going on at your work. There is something that is going on which is supposed to be happy, but at the same time, something in life is not allowing you to feel that happiness. Reverse is also true. There is something great happening in your family, in your personal life, but your work life is fucked up. Something happened today, or something is happening. You're going through something which is non-trivial, which is a little more elongated. But जब आप इन सब में से कई बार, I think इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है. I really wish I had a trick, but I can just tell you कि हमारी अपनी जर्नी में ना, I have seen that वो highs were higher and the lows became lower. तो हाई पे से उतरना भी बहुत मुश्किल था, पर लो में से वापस आना बहुत मुश्किल था. तो फिर ना you should ideally, and as a founder that's a muscle that you eventually develop. If you don't, you're screwed. And that muscle is not a very nice answer. That muscle is numbness. That muscle is that you don't go really high when there is a happy news, and you don't go lower when there is a bad news. You become a flat line. You literally become a flat line. एक concept है stoicism का. Read about it. Stoic people or stoicism basically just talks about exactly this concept where you're not sad in sorrow and you're not ecstatic in happiness. You look at life as a continuum, and somebody says, hey, you know what, we achieved this, and you smile and say, I'm very happy for you. And somebody says, you know what, we are screwed, we are finished. I'm like, okay, it's okay, we'll see it another day. This may sound very theoretical, but मैं अपनी लाइफ से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ जहाँ पे both me and Sakshi were in deepest possible shit, and we were playing Antakshari because ऑफिस में दिवाली की पार्टी चल रही है. एंड अंताक्षरी तो छोड़ो, मतलब हमारे को तो किसी भी तरह का गाना भी नहीं सुनना चाहिए था उस समय, बट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिब्रेशन एंड वी आर ऑल्सो चेयरिंग पीपल अप. बट वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके इमोशन एज अ लीडर आपकी टीम को नहीं दिखने चाहिए. आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू. I think the bigger reason for that is that as a leader, as an entrepreneur,
Your entire job is to bring stability to the business. If you think about it, entrepreneurs are looked at as risk takers. Entrepreneurs are not risk takers. Entrepreneurs are de-riskers. रिस्क टेकर बाकी लोग हैं. सत्यम एक कंपनी थी, बढ़िया चल रही थी, लोग पीपल वर थ्राइविंग इन देयर करियर. वन डे टर्न्ड आउट कि राजू जी, फाउंडर, CEO, did some sort of scam. Company came crashing. Thousands of people lost job. कौन है रिस्क टेकर? राजू रिस्क टेकर है या people who were having a job there? और द वेंडर्स जिन्होंने कंपनी को उधार पे सामान दे रखा था, और द कस्टमर्स जिन्होंने उस कंपनी के बेसिस पे अपना फ्यूचर प्लान कर रखा था. एक्चुअल रिस्क टेकर कौन है? हर लेंस में every different individual in this equation is supposed to be a de-risker in their own way. For example, somebody who was doing a job at Satyam, they of course were de-riskers. They of course were risk-averse people. They were working in a listed, large, multi-billion-dollar revenue services company with global clients. Like they were all check boxes say कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है. इसी तरीके से founder of that company's job was not to take risks. The fact that he took a risk actually made that company to crash. Founders are supposed to be de-riskers. You're supposed to de-risk your customers. You're supposed to de-risk your employees. You are supposed to de-risk yourself because that is the only path to stability. आपका काम as an entrepreneur वो एक great month नहीं है. आपका काम वो X नंबर रेवेन्यू हिट करना नहीं है और X मेट्रिक को एक बार हिट करना नहीं है. आपका काम है उसको कॉन्टिन्यूस चलाना. आपका कॉन्टिन्यूस काम है इज टू फिगर आउट हाउ विल दिस बिजनेस बी स्टेबल फर्स्ट एंड ग्रोइंग सेकेंड. बिकॉज अगर आपका पॉइंट सिर्फ ग्रोथ है तो देन हु इज प्रोटेक्टिंग द फॉल? सो एट एवरी लेवल यू एक्चुअली आर सपोज टू प्रोटेक्ट द फॉल. But where does it start? Charity begins at home. अगर आप इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल नहीं हो, आपका बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता. कोई तरीका ही नहीं है. अब इमोशनल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लेके आएगी? तो फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस में बहुत हाई फील करना और अमेजिंग डिसीजंस ले लेना स्टूपिडिटी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट एज सून एज योर प्रोडक्ट स्टार्ट्स वर्किंग, you actually start building a lot of product. It happens. It is going to fail you. As soon as some part of the product fails, you start pivoting. You start figuring out कि अच्छा और क्या करें और क्या करें और क्या करें. नहीं. Stay put. If you won, relax. If you lost, relax. Because emotional stability is the only way. अब जब दुखी हैं तो टीम को कैसे ना दिखाएं, या अपने वर्क प्लेस पे उसका रिफ्लेक्शन कैसे ना लाएं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है. दैट यू हैव टू बिलीव दैट इट्स अ लॉन्ग गेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नो मैटर हाउ शिटी द डे इज टुडे और नो मैटर हाउ शिटी द मंथ वाज, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग बेटर टुमारो एंड वी आर गोइंग टू लिव लॉन्ग इनफ दैट ऑल ऑफ दिस विल जस्ट इवेपोरेट somehow. मेरी फेवरेट कॉमिक है वो कैल्विन एंड होबीज. दिस अ कॉमिक स्ट्रिप. तो उसका एक वन ऑफ दैट फेवरेट वन आई हैव इज वेयर कैल्विन इज टेलिंग होबीज, he said, Hobies, you know what? One day we all will die. What's the point of all this? And in the next scene, they kept looking into the horizon. And in the third strip, Hobie said, but Calvin, the problem is that all other days we will have to live. And that's actually the truth. If you are not going to embody this, because कहाँ से लाओगे वो courage? कहाँ से लाओगे? क्योंकि जब सिचुएशन शिटी है तो शिटी है. मेरे प्रवचन से सिचुएशन नहीं बदलेगी. उस मोमेंट जो आपका अनसेटल्ड इमोशन है, जो चीज़ें मुझे अनसेटल आज भी करती हैं,
वो करती हैं. In that moment, what can I do? But I can only put them in perspective where the pain dwarfs out, the pain lessens. I feel less unsettled. And because I keep practicing it again and again and again and again and again and again, धीरे 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 धीरे, it becomes a flat line. Your emotions, become numb. I've had days where in a single day, my WhatsApp said, "Oh, we just closed a great deal." Another WhatsApp after 30 minutes said, "Oh shit, one of our key employees resigned." Another WhatsApp after 2 hours said, "Oh, we just, made a new hire, a great one." And थोड़ी देर में WhatsApp फिर आया, उसने बोला यार ये वाला customer is in the red line, may leave us. And वो एक पूरे दिन में बोल रहा था कि फिर इमोशनल कब हूँ मैं, किस चीज़ पे इमोशनल हूँ, कौन आज खुश होना है, आज दुखी होना है, आज का प्रोग्राम क्या है. But as you grow, these things will start snowballing so much that in a sad way, I will say that your emotions should die. But in the right way, I would say that you just put your emotions in perspective and you start understanding that it's a long game. This event is not going to matter tomorrow. So just stay with it and don't act. When I'm unsettled and I'm very happy, I don't act. I don't act in heightened emotions either ways, because most of my stupid decisions actually happened when I acted in a heightened emotional state. Either I was too happy and cocky, or I was too low and too vulnerable. Both were the worst states.